काइंड ऑफ रोल्स. जब ये फिल्म आप तक आई तो मुझे बताइए, व्हाट एक्साइटेड यू टू बी पार्ट? नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? वो ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी. तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे. मैंने कहा यार ऐसी भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से. मैंने कहा अच्छा. सो एनीवे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया. मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे. कहते आ जाइए हैदराबाद. बेंगलोर में थे. तो मैं चली गई बेंगलोर. तो कहते अरे तुम तो आ गई. तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई. तो कहते अच्छा. तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है. कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई हो तो कर ही लेते हो फिल्म. क्या बात है. सो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी. तो आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक जो पागलपन तो होता है. तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है. तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली. नवाज भाई, ये कहानी इनकी तरफ से तो बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी. एक्चुअली क्या हुआ, जब फ़ोन आया इनका तो मैं ना बैंगलोर में था और बैंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल, और कप लगे हुए थे मेरे कमर में. होता है ना जिसमें कुछ हाँ वो ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ. तो अचानक से फ़ोन आया. तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत. मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, वहाँ बोले मैं आ जाऊँगी तो आ गई. अब आ गई क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं वो, क्या थॉट है उनका एज एन एक्टर. मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी. तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकली, स्टोरी थी ये जब सुनी तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था मना ना करने का. डेफिनेटली क्या बात है, क्या बात है. बिल्कुल जिस जुनून की आप बात कर रही थी, ये जुनून दोनों एक्टर्स में हमने एज एन ऑडियंस भी देखा है. थैंक यू सो मच फॉर पार्टनरिंग अप टुगेदर फॉर दिस वंडरफुल टाइटल. अवनीत, मैंने वो पहला तीर तो उसी टाइम पे छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी. आई एम ट्रूली एक्साइटेड फॉर न्यू टैलेंट and I think that we deserve new talent. Thank you so much. लेकिन how excited are you? Are you excited ज़्यादा, nervous ज़्यादा? And let me say, if I was in your position, sitting between Kangana and Nawaz sir at this point, I would be feeling a lot of feelings. तो मुझे बताइए कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? This is a very special and a very emotional day for me. I can literally hear my heartbeat till here and बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. और मैं अभी बस रो ही रही थी जब मैंने ट्रेलर देखा. एंड जस्ट टू से दैट ये मेरा डेब्यू है, मेरी पहली फिल्म है और मेरी पहली फिल्म ही मुझे नवाज सर और कंगना मैम के साथ मिली. ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए. सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हेन मैम चोज मी एज हर टीकू, दैट वाज सो स्पेशल फॉर मी. एंड आई जस्ट वांटेड टू प्रूव that I can do justice to this character because I know that Tiku is so close to her heart. This film, this script, this story is so close to her heart, जैसे मैम ने बोला. तो I just wanted to do justice and नवाज सर के साथ मतलब उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं जब पहली बार हम लोगों ने सीन दिया. और आई थिंक वो वाली नर्वसनेस आज भी मुझे फील हो रही है. एंड बस ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कंगना मैम को एंड नवाज सर को कि दे चोज़ मी एंड मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है. हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट शी ट्रीटेड मी लाइक हर ओन एंड दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी. आई वाज वेरी नर्वस एंड शी वाज देयर इन ईच एंड एवरी सीन. आई रिमेंबर हमने एक एक सीन साथ में बैठ के रिहर्स किया है मैंने मैम के साथ एंड सर के साथ. सो It's a privilege. It's a position of privilege मैं कहना चाहूँगी. And yeah, congratulations once again. Thank you. एक compliment भी देना चाहूँगी that you say you're nervous. You just kind of drift into different things, but still that Bollywood dream continues, and yet it manages to nurtures and take care of so many people. It's a heartfelt ode, a kind of love letter to those who come to the city. Somewhere they lose their dreams, but they yet end up finding something much more meaningful. It's just that thought. And me as a producer, I'm anyway a very busy actor, so whatever I do, it's not just to occupy myself.
it has a larger meaning to it. You know, like for me, I think the most important thing in this project for me was to delve into the people who we see behind actors, you know, behind the stars, and as our own journeys, you know, because maybe as much we talk about the struggles that we faced as coming up in this line, but a piece of art, you know, a creative interpretation of that struggle will, I think, will kind of strike that chord with audiences. That's why I indulged in this project. And also working with Navasa so many years, never got an opportunity, and finding fresh talent like Avneet, the way I was also found by somebody, you know, giving an opening to outsiders to come into films. These are far more important for me, you know, and again finding amazing people outside of that regular film setup that we make, you know, like Prime Video, where these incredibly talented people internationally, and you know, like kind of working in on world platform, and finding, you know, rooted stories in our country, in our culture, finding talent and giving them this international platform to showcase their talent. This is such a great time to be in the films, and I'm glad that that, you know, I lasted this long. Oh my God. Don't say lasted, Kangana. Don't say lasted. I mean, It's been 17 years Yes. since I've been working as an actor. It's wonderful. Absolutely, absolutely. Can we please give a round of applause for that? Amazing. मैंने बहुत सारे स्क्रिप्ट रीडिंग्स किए, वर्कशॉप्स किए, एंड विद सर एंड मैम, एंड आई हैड गेन अ लिटिल बिट ऑफ वेट इन दैट टाइम, एंड बहुत सारे मूवीज़ देखे मैंने एज मैम सेड, और आई थिंक मेन तो यही था कि मैंने मैम के साथ जो रिहर्स किए थे सीन्स, व्हाट आई हैड रिहर्स्ड विद हर, she really made me feel very comfortable on set, because obviously I was very nervous. But rehearsing with her, getting her acting skills, because I've been like watching her like since a very long time, and I've loved her films, I love her acting, how effortless she is. So I think ma'am has really helped me, and Navasa also made me really comfortable on set, because I was very nervous during the shoot. So yeah. Love it. Thank you, Vinamra, for your question. We're going to move on to Sonali from TV9. Sonali, are you here? Hi, the mic is coming to you, don't worry. मेरा सवाल नवाज सर से है। हेलो सर। सो ट्रेलर में हमने शेरू को देखा, तो उसने जिस तरह से इंडस्ट्री में स्ट्रगल दिखाया है, उस तरह से आपने भी इस फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने भी सेकेंडरी किरदार भी किए हैं। तो क्या आपके उस एक्सपीरियंस का जो रेफरेंस है वो आपके किरदार में आपने यूज़ किया है? बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि उस दौरान सेकेंडरी क्या मतलब बहुत छोटे छोटे रोल भी किए थे मैंने। एक अभी मैं जब मेकअप करा रहा था, तो उस दौरान मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हम लोग एक फ़िल्म कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे जूनियर आर्टिस्टों से एक मैं भी था, तो उनका मेकअप होना था। तो आई एम सॉरी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, मैं लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, और हाथ में पाउडर लिया और सब पे बोले हो गया मेकअप, जाओ। तो इस तरह की अभी अचानक से याद आया था मुझे इंसिडेंट। तो बाकी बहुत सारे ऐसे थे जिन 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 लोगों के साथ मैं स्ट्रगल करता था, वो मैंने फिल्म में भी देखा। एक मिस लवली फिल्म की थी मैंने, तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त थे पुराने। अच्छा, उनको पता नहीं है मैं मेन लीड कर रहा था उसमें मिस लवली में, तो बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने हेलो, मैं मेन लीड कर रहा हूँ, किसी को बताने मत, मैं तुम्हारे साथ काम करता था। बहुत सारे इंसिडेंट होते थे। Thank you. Thank you for मैंने एक फिल्म की थी बहुत पहले, आई थिंक 2002 के आसपास की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनाली आपका। Sachin, like I said, you know, we were to do this film. It was called Divine Lovers back then when this was launched, and Irfan Saab and I and Kabir together we worked on this. And this was, like I said, we had come from outside, and we'd all seen these kind of struggles. But somehow only an achiever's film makes it to the celluloid, you know. Like we know this person had struggled, and you know, then that they, like I'd done a Wo Lamhe, or say like a Dirty Picture, or always like somebody who's made it. But there are lakhs and lakhs of people who are coming to Mumbai every day with a dream,
where do these people go? What happens to them? Because some of them run away from their homes, like like the kind of situation I was in. I had shut all my doors behind me, so there was no going back for me. So what happens to people like this? And this thought often, kind of. This was just one incident, that just happened in my life. That one day, one audition. Every day I used to get rejected in auditions. Every day, just people just rejected me, and one selection just changed my life. Which Anurag Basu had approved of me and all that. And had that not happened, what would my life be? Where would I end up? This always kind of played in my mind over and over and over again. That doesn't make me less talented. That I always say that the examination happens one day, and but rest of the day you could be a great student, but then that one day it doesn't go well, but that's your result of your life. So these kind of thoughts, that what happens to these people and what would my life be, made. If you go to think about it, I was driven by a passion from the age of 15. I had not written love letters like other girls, or I have not indulged in any. I was already on the set. I was already pursuing a career at my teen age, when people are mostly, so what kind of a film would I make? And then life was full of struggles, mostly struggles, and then few successes. This is the only film I could make. There is no other story that I can tell, because I don't know anything else. Beautiful. Is that, to begin with, my biggest hesitation was that who will play this role? Because this is such a challenging role for newcomer. का तो कभी सोचा ही नहीं था. But in terms of actresses, we were trying to think who can do this kind of a role. And honestly, I needed a very strong actor. क्योंकि ये मेरा ही रोल था, और मुझे भी कबीर ने ऐसा लिख के दिया था आफ्टर रिवॉल्वर रानी कि मतलब मेरे लिए भी, मेरे से भी ऊपर का लिख के दिया था. बहुत डिफ़िकल्ट रोल लिख के दिया था. एंड फिर मैंने सोचा कि आई शुड, क्योंकि गैंगस्टर में मैंने भी एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस की है, तो आई डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू गर्ल. और उसमें हम हताश हो गए पूरी तरह से, क्योंकि मुझे वो एक्टिंग कैलिबर मिला ही नहीं किसी में. एंड स्पेशली एक वो जो स्मॉल टाउन गर्ल की जो इनोसेंस होती है, वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी. फिर मैंने मुकेश हावड़ा को भी कहा, मैंने कहा हम लोग ना ऑफिसेस खोलते हैं हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में, पूरी हंट करते हैं. So we were about to do that, and a friend of mine, Ajay Dhama, he sent me her Insta link, and the minute I saw her, I just had this feeling. I hadn't yet auditioned her, but I got this feeling that this girl can do it, because she was absolutely raw. And raw, and also unassuming and very free. So I met her, and I just did some exercises with her, and I figured that she'll be able to do it. And I was taken aback by her spontaneity and her understanding of human emotions, which are like layered and really deep. And especially her character, more than Sheru's character, goes through so many trials and so many layers as a woman. But she, being so young at this age, she had the emotional stamina to touch those notes, to dive into those depths, to have that. And I always thought of her as this young chirpy girl, and I thought maybe in emotional scenes I'll have to work very hard with her. But I was so shocked to see her emotional potency. And honestly, that is what I mean, that when you get a hunch, and I was so right about her. And I'm glad that she's getting this amazing break, because after this you will never get a weak role. Like after Gangster, I got more and more and more difficult roles in my life. So that will happen to you also now. Thank you for that love.